A very, very good afternoon to one and all present here today. And yes, we can definitely see that there's a lot of weekend motivation in our educators, and that's a very good thing to see. So, as said by Sir Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. And we would also conduct a session today here with Mr. Rana, okay, which would make sure to provide the very essence of this well said quote by Mr. Franklin. Okay, to one and all present here today, I welcome all once again on the behalf of Homework Captain team and myself, and extend a warm welcome to our esteemed guest speaker of the day, Mr. Pushpendra Rana, who is going to take us to the topic Learn How to Learn Last Minute Revision Strategies. And that is a very, very innovative topic, innovative topic which hasn't been discussed till now. And it will also explain us the practical applications for increasing the classroom effectiveness. Now, who is Mr. Rana? Sir is an extraordinary personality who has been laureled in his field of work and has numerous years of competitive experience in the field of CBSE teaching. He serves as a CBSE coordinator, CBSE master trainer, subject matter expert for the NCERT, and has won various prestigious awards like International EDUCS Icon Award 2021, International Education Award 2020, and so many more. With more than 25 years of experience in the field of education, he is also associated with various giants in our country, like the Reliance Foundation Schools, the IDYM Foundation, Global Schools Leaders Consortium, etc. And that is, a Sir's profile, which not even covers half of it. We welcome Sir once again and request him to take the stage for today. Thank you, sir. Thank you so much, Harsha, and welcome all the educators here. Today we are going to discuss learn how to learn. The main thing is we teach the students and the students are learning in our classes. But the last minute strategies, as in pandemic, most of the time the students are online, the teachers are online, and we are facing difficulties. There are learning gaps. So how to learn? What should be the strategy? Before that, let me share my screen. Before going further, just watch this video and then we will start. Sir, does the video have any sound? Is it not audible? No, sir. The sound is not coming. Just a minute. Let me check. Share sound. The building of my now audible is beautiful. Yes, sir. Oh, hi friends. मेरा नाम है पीहू. हम आपके लिए फनी वीडियोस और अच्छी अच्छी मोरल स्टोरीज बनाते हैं. पता है आज क्या हुआ? आज मेरे फाइनल एग्जाम्स का टाइम टेबल आ गया है. और मम्मी को आपने देखा था कितने आराम से बैठी हुई है. अब देखना. मम्मा, मेरे एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है. क्या? हाँ. ये लो मम्मा, मेरे एग्जाम का टाइम टेबल आ गया. दिखा सुनो. अरे 10 दिन बाद तो तेरे एग्जाम शुरू है. ओह, और इस बार तो सिर्फ संडे की छुट्टी आ रही है. बीच में कोई छुट्टी नहीं है. पीहू, तेरा इतना सारा कोर्स कैसे होएगा? जा तो बुक्स निकाल फटाफट. जल्दी जा. एसएस निकाल, हिंदी निकाल, संस्कृत निकाल. जल्दी से लेकर आ. मैं एक चीज पढ़ूंगी ना नहीं. तू जल्दी लेकर आ. देख तो सही तेरा टाइम टेबल. एक भी छुट्टी नहीं है, कुछ भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ. जल्दी लेकर आओ. और आयु, अब मैं दीदी को बहुत अच्छे से पढ़ाना है बेटा. अब आप अपनी पढ़ाई जल्दी जल्दी आप ही कर लो. फाइनल एग्जाम, इतना सारा कोर्स कैसे होगा पीहू का? पता नहीं. पीहू जल्दी लाओ ना वो. हाँ ला रही हूँ. मम्मा आपके लिए एक और गिफ्ट. क्या? मेरा टाइम टेबल. तेरा भी आ गया टाइम टेबल. 15 दिन बाद से तेरे भी एग्जाम शुरू. हाँ. कैसे होगा? पीहू जल्दी लाओ ना वो. बस
आज से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आज से तुम्हारा टीवी बंद, रिमोट बंद, कार्टून बंद, मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, गेम्स बंद, घूमना बंद, बाहर जाना बंद और किसी फ्रेंड का घर पर आना बंद, पार्टी बंद, रेस्टोरेंट बंद और फास्ट फूड भी बंद, सब कुछ बंद बंद बंद। बस आज से पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मम्मी मेरी चॉकलेट, मम्मी मेरा मोबाइल। सब बंद। सिर्फ पढ़ाई करोगी, सिर्फ पढ़ाई करोगी, सिर्फ पढ़ाई करोगे। इसके अलावा मुझसे कुछ बोला तो फिर देखना तुम। लेकिन मम्मा, ओनली 1 मंथ तक सिर्फ पढ़ाई होगी इस घर में और कुछ नहीं होगा। जाओ आइयो, आप भी अपनी बुक्स लेकर आओ। अरे रुचि, ये तो क्या कर रही है? ये है हमारी नानी जी, गीता नानी। मम्मी, दोनों का टाइम टेबल आ गया। इतना सारा कोर्स है, मैं कैसे कंप्लीट कराऊंगी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रुचि, अभी तक तो बड़ी नहीं हुई। जैसा तू अपने पेपरों में टेंशन लेती थी, उतना ही अपने बच्चों के पेपर में टेंशन ले रही है। ऐसा नहीं करते बेटा। देख बेटा, बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालते। क्या करूं मैं मम्मी? आजकल हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का जमाना है। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैं इतना टेंशन लूंगी तो बच्चे भी टेंशन में आ जाएंगे। सच्ची में आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है। अच्छा बेटा, अब तू बच्चों को स्मार्टली पढ़ा। ठीक है मम्मी। So friends, we have seen that whether teachers, students and parents, just before the exam, most of these are stressed. They are stressed for exam, very stressed. How to learn? That is the question there. So today we are going to discuss about the different revision strategies. And we are going to discuss about multisensory revision strategy. What is multisensory revision strategy? So as scientists have studied, the brain have found that our memories actually physically change our brains. When we learn something, the cells, neurons in the brain, they change and the synapses between them become stronger. The more we recall the information, the more well-trodden the connection becomes. Meaning the electrical signal can travel quicker and easier along the path. This means we can collect, recall information quicker and easier. That is why there are different ways of learning. The different students are having different type of intelligence, as in they are having multiple intelligence. So that is why there are multiple pathways to learn the same information, to recall it. A visual pathways there, phonological pathways there, spatial pathways there. So these different pathways are there to recall the thing, to retain the thing for a long period of time. So first, we are having some ideas relating to revision strategy. The first revision strategy: ask your student to create a PowerPoint, present their notes there, and short notes. Especially in 11th and 12th in English, note making is being taught. These note makings can be used in different other subjects, and there the students can make their notes, and while they are making their notes, they make notes in their presentation, and they should use some animation. When they are using animation, their presentation will become something interesting. They should use different images. They should use different colors and sound. It will help to retain the thing for a long period of time. It will create strong recalling there. The second revision strategy is the students can create mind maps, spider diagrams, or learning wheels. These help to categorize and subcategorize information and also create stronger visual memories. They should use this activity to create their own mind maps, and they should discuss in their class with other students what things they have learned, what things they should include. They should discuss with each other. Like here, I have presented one mind map relating to fiscal policy. So there are different aspects of fiscal policy or budgetary policy. It relates to economy, it relates to finance, it relates to assets, it relates to expenditure by the government, it relates to allocation of funds to different areas. Now, if student make mind maps, so just before exam, when the student is going to give exam,
she or he can recall the things very quickly, seeing the main points there. Another strategy is role play. Role play is a very important factor to recall, retain the things. Here, one good role play game is introduction or mingle. So students should write down the key terms, theories, historical, geometrical, fictional characters on slip of paper. Now, each student should take a slip of paper. They should introduce themselves to each member of the group and introduce themselves as whatever is written on each piece of paper. They must explain who or what they are and key points about themselves. The other person then does the same if it is being done. So first, it will be a good learning. Second, the students can enjoy also. And when students enjoy, when they are happy, they learn more. They can swap the slips and go and introduce themselves to others as whatever is written on their new slips of paper. So this process is very helpful. We have tried several times in our classroom and it has worked. Another revision strategy is if the student is a strong auditory learner, she should or he should try recording herself reading her notes or explaining them and then playing it back to herself at regular intervals. I have seen my daughter is now in graduation and she is having online classes. So what she do? Whenever she has to learn, she record her voice, she record her notes in her voice, and later she listen to it again and again, and it is benefiting her. The students can do this while they are out running, they are on the bus, they are lying on their sofa, they are taking the lunch or dinner, they are going to bed. Anytime this can be done. One more strategy is there after the location of their revision. If the student is a kinesthetic learner, he or she should try to do some revision while she is outside sitting or walking. So if you are having recording, these recording are very helpful that time. One more strategy is there. If the student find that she is or he is able to listen to music when she revises, then use this to her advantage. Sometimes the parents or teachers stop students that they should not listen to music, they should concentrate, but the different students are having different concentration powers. Some have concentration with music, some have concentration with solitary. So it depends on the different students. If they find it good, so let them listen to the music while they are learning. Try and listen to certain types of music systematically while you are studying. It will help with her recall in an exam, as she or he can think of what she or he was studying while she was listening to a particular song or a group. And here that song, the particular song, which the student is liking more, if something is learned with that, it has more memorable. Students should try this activity to see if listening to music systematically help them to revise. Dear friends, you can also try it. One more revision strategy is revise with others in groups. Talking through ideas and testing or teaching each other is an excellent way to reinforce knowledge and help it to stick in long-term memory. Just be sure not to get distracted by discussions over the millions of things that are more interesting than revising. Let me tell you one story of my school. We are girls boarding schools, and in our boarding schools, the girls, when they come for their dinner, after dinner, as most of the girls, they are talkative. So after the dinner, most of the time it happened in past that they wasted almost half or 1 hour just in gossiping. Then
they were motivated by our principals that you can talk after your dinner, but if you talk about your learnings of the class, your subject, your syllabus, you can discuss the things, your current affairs, then it will enhance your knowledge and you can have discussions with each other also. The students started this, and when the student started this, we had seen a great change among the students. They are learning more now. One more strategy is there, learning something then by teaching. Flip classrooms. Flip classrooms are one of the best way to learn the things. I often ask my students that they will teach in the class. They will teach at my place. They will experience how we are doing the things. And the students with a great joy are accepting this challenge. When they teach in the class, they prepare their lesson. They take it as a challenge because there are students in the class. They ask more questions to students. More questionings are there. More discussion is there. And in this way, they learn more and more. In this, the students can involve the classroom, the other students there, the family members, brother, sister, mother or dad, friends and relatives, and get them to teach them what they have learned in their courses. My son is a little one now, and every day, whatever he learned in his class, in the evening he asked me, Papa, I have to teach you. And he started teaching me. This helps a lot. One more strategy is there, make up games and quizzes based on revision notes to play with friends and family. These may be plus different puzzles, crosswords. So these different type of quizzes, games can be made. And when the students learn with games and quiz, the best thing is they enjoy. When we let the students to enjoy their learning, they learn more. So we have to create such strategy with which the student can enjoy, the child can enjoy. The child will not feel that learning is a burden. The child will feel that learning is a fun. Make learning a fun. We can use cue cards and color coding information, which are other good ways of revising and strengthening memory. So these different type of things can be used to learn better. Now let's go to another part of the videos that we have watched in the beginning. Some strategies they are suggesting here. Let's watch. पीहू, बेटा अपने एसएस की बुक्स लेकर आओ बस ओनली। क्या आपके घर में भी ऐसे ही होता है? बच्चों के एग्जाम आते ही मम्मी पापा दोनों को टेंशन हो जाती है। आज के वीडियो में हम आपको 10 टिप्स बताएंगे स्मार्टली पढ़ाई करने की, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपको कोई भी पॉइंट गलत लगे तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। आप एसएसटी पढ़ रहे हो? आप जीके पढ़ रहे हो? ठीक है, चलो अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। बेटा, आप बार बार जगह चेंज करते रहोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? हमेशा पढ़ाई एक जगह बैठकर करनी चाहिए। अपनी एक जगह फिक्स करो, वहाँ बैठकर पढ़ो, तभी मन लग पाएगा पढ़ाई में। अच्छा मम्मा, एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ। मैं कहाँ बैठूं? यहाँ पे बैठ। नहीं, ये अच्छी नहीं है। नहीं, यहाँ पे बैठो। नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ये कहाँ जा रहे हो? किचन के अंदर। माँ, आप यहाँ पे टेबल लगा दो। क्यों? मैं तो यहाँ पे बैठूंगा, खाता रहूंगा, पीते रहूंगा, पढ़ाई करते रहूंगा बस। मम्मी, अभी मैं 10 मिनट पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद 1 घंटा टीवी देखूंगा,
उसके बाद 5 मिनट्स और पढ़ेगा। हाँ मम्मा, अभी भी 10 मिनट्स पढ़ाई करूंगी और फिर टीवी देखूंगी और फिर रात को पढ़ाई करूंगी। किस टाइम से किस टाइम तक आप पढ़ोगे और किस टाइम से किस टाइम तक आप खेलोगे, ये आपका टाइम सेट रहना चाहिए। ऐसा आप टाइम टेबल बनाओगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका पढ़ाई करने का। ओके मम्मा, तो पहले मैं खेल लूं। उफ, ये कभी नहीं सुधरने वाला। मैं कभी नहीं सुधरूंगा क्योंकि मैं हूँ आयु। आपको एग्जाम का टाइम टेबल मिल गया है, तो सबसे पहले आप एग्जाम के टाइम टेबल को टेबल पर या जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां पर सबसे पहले उसको लगाओ। मेरे एग्जाम्स 28 फेब को स्टार्ट हो रहे हैं और 7 मार्च को खत्म हो रहे हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट काम आपको करना है टू डू लिस्ट बनाने का, जिसमें आपको लिखना है आपके कितने लेसन आने हैं, कितने हो चुके हैं और कितनों का रिवीजन करना है और कितने पेंडिंग है। ऐसे आप हर सब्जेक्ट का बना लो। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। हाँ मैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। Why is water essential for plants? मुझे तो लिख लिख कर याद करने में बहुत अच्छे से याद हो जाता है। Plants absorb nutrients. GRAPES grapes. PAPAYA papaya. मम्मी काट के लाओ ना। ऐसे ही लर्न होगा तेरे को। हर फ्रूट खाएगा और एक फ्रूट की स्पेलिंग लर्न करेगा। CRRRYD रोड। मुझे तो रीडिंग करके याद होता है। तो देखा आपने, हर बच्चे का लर्न करने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई बच्चा लिखकर याद करता है, कोई बोलकर याद करता है, कोई देखकर याद करता है। पहले आप अपने लर्निंग स्टाइल को पहचानो और अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो अपने मम्मी पापा से हेल्प लो। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। CRRRYD रोड। मम्मा, मेरा एसएससी का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपको रिवाइज भी करना है और रिव्यू भी करना है। मुझे रिवाइज मतलब तो पता, लेकिन रिव्यू मतलब मुझे नहीं पता। रिव्यू मतलब होता है आपने जो स्टडी की है उसका आप अपना एक सेल्फ टेस्ट लोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने कितने अच्छे से तैयारी करी है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिव्यू करना। ओके मम्मा, मैं भी अपना सेल्फ टेस्ट लेती हूँ और देखती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। वेरी गुड, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा आपको कितनी देर हो गई पढ़ाई करते हुए? मम्मा 1 घंटे से ऊपर हो गया। बेटा हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए 5 मिनट का, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मम्मा इसमें उस 5 मिनट में करूंगी क्या? आप उस 5 मिनट में म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ी देर टीवी देख सकते हो, या सबसे अच्छा होता है आप गार्डन का एक राउंड कट करो। हाँ मम्मा, मैं भी साइकिल से राउंड लगा के आती हूँ। मम्मी मैंने तो पहले से ही ब्रेक ले चुका हूँ। मम्मा ये आधे घंटे से ही ब्रेक ले रहा है। हाँ वो मुझे पता है, इसका 5 मिनट पढ़ने का टाइम होता है और 1 घंटा ब्रेक का टाइम होता है। हाँ, जैसे कि दीदी का 5 मिनट खेलने का टाइम होता है, 1 घंटा पढ़ने का। आयु ऐसा ना हो आपके 100 में से फिर 5 नंबर आए। मैं पढ़ाई करूँ। हाँ देख लो। इस क्वेश्चन को मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटू? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मम्मा। तो बेटू को पूछना चाहिए ना, जब भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हेल्प मांगो अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, टीचर से, यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो। ये बात समझा दो मुझे। मम्मा इधर आओ, मेरी भी हेल्प कर दो। क्या हुआ? ये वाला लेवल क्लियर नहीं हो रहा। आयु मैंने कितनी बार बोला है पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, मोबाइल छोड़ दो अब। ठीक है। मम्मा मुझे बोर नहीं पढ़ना। क्या हुआ? मम्मा मैं बहुत बोर हो गई पढ़ाई कर कर। कितनी देर हो गई आपको पढ़ते हुए? 15-20 मिनट ही हुए हैं। अच्छा, पढ़ाई क्यों करते हो? कुछ बनने के लिए। कुछ बनने के लिए? तो हमेशा अपना मोटिवेशन आगे रखो। आपको क्या बनना है तो पढ़ाई करने में आपको मजा भी आएगा और मन भी लगेगा। आपके लिए ये 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 1 मंथ में आप जितनी पढ़ाई कर लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप भी अपना मोटिवेशन ढूंढो कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। मम्मा मुझे इंजीनियर बनना है, इसलिए मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। मम्मा मुझे तो बाहुबली बनना है। तो मैं बड़ा होके बाहुबली बनना चाहता हूँ। और मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तो दोनों जाकर पढ़ाई करो। ठीक है मम्मा। ठीक है। नहीं, बाहुबली ने तलवार चलाना सीखा था।
बाहुबली ने तलवार के साथ साथ पढ़ाई भी करी थी। है? उसने पढ़ाई भी करी थी? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। मम्मा मेरी एसएससी कंप्लीट हो गई और उसके साथ रिव्यू और रिवाइज भी कर लिया मैंने। वेरी गुड। तो इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड? यस। अच्छा बताओ, आप क्या खाना चाहते हो आज डिनर में? आपका फेवरेट डिनर बनाओ। राजमा चावल। पक्का, आज मैं आपके लिए राजमा चावल बनाऊंगी। जैसा अपन टारगेट सोचते हैं और उसको कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए अपन को खुद के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड भी रखना चाहिए। उससे अपन को बहुत अच्छा लगता है और नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करने का मजा भी आता है। ठीक है मम्मा। मैंने भी 1 से लेकर 15 तक लर्न कर लिया। 1 से लेकर 15 तक लर्न भी कर लिया? सुनाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। अरे मैंने 1 से लेकर 15 तक लेसन बोला था, काउंटिंग नहीं। 15 तक पूरा? ठीक है, फिर से आ रहा हूँ। हाँ मैं भी जा रही हूँ। मैं अब करूंगी साइंस। हाँ, आप साइंस भी करो और थोड़ी सी आयु की हेल्प भी कर दो। मुझे बड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मम्मा ये ऐसे खा रहा है। क्या बेटा? अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। एग्जाम टाइम में नो अनहेल्दी फूड। तो मम्मा मैं पूरे 1 महीने तक आइसक्रीम नहीं खा सकता? इस 1 महीने में आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा बताओ, एग्जाम टाइम में सबसे बुरा क्या हो सकता है? नंबर कमाना। नंबर कमाना। एग्जाम ना देना। अगर हमें बुखार हो जाए तो। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप एग्जाम ही नहीं दे पाए, तो आपके तो उस एग्जाम में क्या आएगा? 0। इसलिए इस 1 महीने में आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं खानी है, अपनी डाइट अच्छे से रखनी है, ताकि आप फिट एंड फाइन रहो और बहुत अच्छे से एग्जाम दे सको और बहुत अच्छे नंबर ला सको। ठीक है ना? और एग्जाम के बाद फ्री, फिर अच्छे से खेलेंगे, एंजॉय करेंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ खाएंगे जो आपका फेवरेट हो। आप सबके भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहती कि आयु और पीहू ये सब टिप्स फॉलो करते हैं, पर कोशिश करेंगे। आप सब भी ये टिप्स फॉलो करने की कोशिश करना और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना। आज के वीडियो के So friends, these were different strategies used, can be used before the exams. One thing I'll discuss here about the timetable, time planner. We ask students to make their timetable that from 9 to 10 study maths, or 10 to 11 study English or SST or that. Please don't ask the student to be rigid to timetable. When students are making their timetable to study at home, that time they should allot time for a subject, that how much time they are giving to a particular subject in a day. That time may be of their choice. They can study that in the morning or in the evening. The students should have a checklist. Just in the morning, they have to decide how much, in which subject we have to study in this day. That checklist they will make in the morning, and when they are going to sleep, before that, they should check whether I have studied English 2 hours or not. If I have allotted 2 hours for that, I have studied economics 1 hour or not, if I have allotted 1 hour for that. And if it is not, then they should complete it before that. The different students or different children are having different their timing of getting up or sleeping. So don't insist them that to learn only in the morning or only at night. Whatever time suit to them, let them study that time. Some students are having habit to learn more at night, as this is the common trend now. So let them learn at night. Some are having habit to learn in the morning. So let them learn in the morning, but whatever the time they are learning, they should have a proper timetable that this much time I have to give to a particular subject in a day. If they are not giving, so they will complete it before the sleeping. The best strategy is
peer learning or group learning. So the students should focus on that group learning and peer learning when they are in class and when they are at home. Before exam, whenever they are in class, they should just note the key points. The teachers should tell them what are the key points in a particular topics. If they are having the key points, just before exam, let them learn only key points. They can develop the thoughts themselves. So these are all the strategies which can be followed before the exams. Thank you so much, everyone. Harsha, if there is any question, so you can take that now. Yes, sir, let me look once. Yeah. Revision strategy. Yes, so Ms. Shruti has a question, sir. Strategy 8 can be like peer tutoring also, right? So you might have shown some strategy 8 and she's asking whether it can be like peer tutoring. Yeah, I have discussed about that peer learning and peer tutoring. So, and I'll give you an example. There was an student in our school. So she was not taking their study seriously. Most of the time we motivated her, but still it was not working. Then I found that there is a girl, her friend. Both of them were together, and that girl was very intelligent. Then one day I called another girl, and this girl, I gave her the duty that you have to teach her whenever you get the time. And now these two girls, they started this peer learning, and this peer learning helped them a lot. So peer tutoring, yes, that is a very good thing in learning. All right, so are there any other questions, educators? You all can post in the chat box if you have any other questions for sir. Okay, I think there are no other questions as of now, Mr. Rana. All right then. So, well. Oh, another very well said quote by Sir Benjamin Franklin was, "Tell me and I may forget, teach me and I may remember, involve me and I may learn." And today's videos and all the content, okay, which Mr. Pushpendra shows us very well aligns to this particular quote said by Mr. Franklin years and years ago. Hence, practicality is the element which should never be overlooked. And today's session taught us very well that how some of the most elegant and simple learning techniques are available at our disposal and how we can make use of them with the proper knowledge and experience. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks for the astounding session we all had. On behalf of the Homework App team and all the educators presented today, I extend a warm gratitude to Mr. Pushpendra Kumar Rana for taking the necessary time out from his busy schedule and grace us with the immense knowledge today. Thank you so much, sir, for being here. Most welcome, Harsha. I feel elated, and I hope this strategy will help the students to learn before their exam, and it will help them to stress out. They can reduce their stress and they can learn in a better way. Thank you so much, everyone. And we'll upload the same on the YouTube channel also, so you all can look at the session if you have missed any part of it. And yes, that's all from my end. Thank you, sir.